Jai Guruji, Sangat ji. Thank you, Guruji, for this beautiful reading. संगत जी, जैसे हमने कल पढ़ा था कि स्वामी जी के पास जब विजिटर्स आते गए ना, तो he got very very irritated by the increasing numbers, day by day. And उनको बहुत गुस्सा भी आ गया. And then स्वामी जी thought कि नहीं, मैंने अभी भी अपने गुस्से पे काबू नहीं पाया. और उनको ये भी लगा कि नहीं, जब एक स्वामी को कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो इतना इस तरह से इंटरप्शन एक बाधा डालती है. देन we learned that he was being disturbed again and again. और फिर हमने ये भी पढ़ा आगे जाके कि जरूरी नहीं है कि एनलाइटनमेंट के लिए आपको एक चोला रिनाउंसिएशन जैसे वो रिनाउंसिएट करने वाले पहनते हैं, वो जरूरी नहीं है. what matters is the constant spiritual sadhana of and वो कैसे आ सकता है? by disciplining the mind, body, disciplining your mind, action and speech. और जो असल में जो ट्रू स्वामी होते हैं ना, जेन्युइन स्वामी, वो बहुत अलग से ही होते हैं और वो बहुत कम होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि स्वामी जी कहते हैं कि इट्स बेटर टू रिमेन इन डिस्गाइज, सो दैट पीपल शुड नॉट डिस्टर्ब यू. कहते इतने पहुंचे हुए मिस्टिक्स होते हैं जो एक्चुअली बहुत ऊपर हैं, बट वो प्रिटेंड करते हैं एज इफ देयर माइंड इज इम्बैलेंस्ड, सो दैट people should not disturb them. Then he narrated us the story of Swami who asked devotees to only bring a pebble. और इवेंचुअली क्या हो गया, वो इतनी ढेरी ढेरी बनते 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 वो ऊपर बैठ गए और थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया लोगों से, और इवेंचुअली लोगों ने उनका नाम ही कंकरिया बाबा डाल दिया. और वो इस तरह की लैंग्वेज भी बोलने लग गए ताकि लोग समझ ना पाए वो क्या बोल रहे हैं. ओके, देन वी लर्नड अबाउट स्वामी जी मास्टर. एक और स्वामी थे जिनके उनके मास्टर ने बोला कि 3 चीजों से थोड़ा सा तुम अवॉइड करो, दैट्स गोल्ड, विमेन एंड फेम. बट वी रेड दैट ही फेल फॉर दीज 3 थिंग्स एंड देन eventually he had to start from the scratch. Then we learned a girl, was very well educated. He enticed Swamiji and kind of made him believe that, he was her husband in previous life. And Swamiji was quite naive. He had also started taking her proposal into consideration. Itna uska prabhav raha Swamiji pe. But after 1 year, Swamiji got so frustrated. And he said that, he learned a lesson from this kind of, episode in his life, that on the path of spiritualism, one can easily get distracted and disturbed, time and again. But he also felt that आपके अगर मास्टर की ग्रेस है ना, अगर ईश्वर की कृपा है ना, तो आप इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार कर सकते हो. Then he went to his master and he said that if you get so much influence again and again on this path, that how many how many births you would have to take again to come to this path again. So Swamiji said there are 2 paths. देखो, एक path है renunciation का, एक path है action in the world का. And it would be very very wrong to compare both the paths. अगर हम कहीं एक superior है, एक inferior है, तो वो गलत होगा. दोनों ही अपनी जगह ठीक है. और स्वामी जी कहते हैं यस, ये भी है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनका पाथ थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है. उनके मीन्स बहुत लिमिटेड होते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग का प्रॉब्लम आ जाता है. और कहते हैं आप कोई भी पाथ चूज कर लो, बट देन यू गॉट टू बी रियली रियली ऑनेस्ट एंड सिंसियर, एंड यू हैव टू ट्रेड ऑन ईदर ऑफ द पाथ विद इमेंस ट्रूथफुलनेस एंड फेथफुलनेस. और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि एक तरह का डिसिप्लिन भी चाहिए होता है. और डिसिप्लिन ऐसा है कि इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड. अगर इम्पोज करें तो वो स्टूडेंट हिपोक्रेट्स निकल सकते हैं, एंड दे वुड डू एवरीथिंग विद डिसऑनेस्टी. Then we learned that how Swamiji was made a successor of Shankaracharya, but Swamiji was not happy. He had everything at his disposal, money, car, servants, everything. But then he thought that, it's not my thing because I don't get time to meditate and to do my practices. So his conscience said, and he heard the voice of his consciousness, and then he just ran away from there. He said, no, this path is not for me. But Swamiji taught a person a very good and meaningful lesson, wanted to just become like him. और वो क्योंकि वो इतना इनामर और इम्प्रेस हो गया कि स्वामी जी के पास खाना भी आ जाता है, लोग उनकी देखभाल भी करते हैं. बट
स्वामी जी ने उनको बोला कि जब मुझे ये चीजें चाहिए थी तब ये मेरे पास कभी नहीं आई, और जब मैं कभी भी नहीं चाहता था मेरे पास आया, स्टॉप रनिंग आफ्टर द थिंग्स, आई जस्ट बिगैन गेटिंग देम. Because Swamiji explained by giving such a beautiful example that fortune is like a flirt, and she will run away from you when you want her, but if you are not interested in her, she will come and chase you. So उसके बाद हमने देखा स्वामी जी जो उस यंग मैन से मिलते हैं ना, जो उनकी घड़ी देके बहुत इनामर हो जाता है, और जो चुरा भी लेता है, इवेंचुअली जहां बेचता है वो स्वामी जी के स्टूडेंट निकलते हैं, दोबारा से स्वामी जी के पास वो घड़ी आ जाती है, पर स्वामी जी फिर उसको ही दे देते हैं. बट उसके बाद क्या होता है, उसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उस यंग मैन में ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ. और बाकी हमने यही सीखा कि ठीक है, हर एक में कमियां होती हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, अगर हमारे किसी से रिश्ते नाते हैं तो हमें वो छुपाना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट रिप्रेस आवर शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि ये जिस तरह के हिडन सीक्रेट्स होते हैं ना लाइफ में, दे कैन डिले आवर प्रोग्रेस. सो बाकी लास्ट में हमने सीखा सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकमिंग अ स्वामी एंड मंक इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है, एक तरह की एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ से को जीना, और क्योंकि डिसिप्लिन एक फाउंडेशन होती है जिंदगी का, और सिर्फ टेम्पटेशंस में नहीं जाना चाहिए या किसी टेक्निक को नहीं फॉलो करना चाहिए, बट डिसिप्लिन को कल्टीवेट करना चाहिए जिंदगी में. उसके बाद वी गोना स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट्स कॉल्ड टू नेकेड रिनंसिएट्स. कहते स्वामी जी कहते, ऑन माई वे टू गंगोत्री आई स्टेड फॉर अ मंथ एट उत्तराकाशी, which is deep in the Himalayas. I used to go for my morning walk 2 or 3 miles towards Tikhala. Between Tekla and my residence, 2 completely naked sadhus lived in the 2 separate rooms of a small wooden house on a bank of the Ganges. अब स्वामी जी किनसे मिले, 2 नेकेड साधु से, जो 2 सेपरेट कमरों में रहते थे वुडन हाउस के अंदर. और उसके बाद कहते they were illiterate widows in their mid-60s and did not have any belongings, not even a pot of water. I knew these two and they were famous, but not because of their learning and yogic wisdom. स्वामी जी कहते मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता था, सिर्फ इसके लिए नहीं कि हाँ भाई ये इनको बड़े ज्ञान है या कोई ऐसी विजडम है, कहते इस करके नहीं. कहते they became famous because of the outer appearance of living naked in such a cold climate. तो इतने cold climate में भी उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता था, इस करके लोग उनको जानते थे. कहते in reality they were full of ego, anger and jealousy. They despised each other. तो स्वामी जी कहते कहने को तो वो ऐसे थे, पर अंदर से उनमें बहुत अहंकार था, गुस्सा भरा हुआ था और जेलसी थी, और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे. कहते one sunny day as I was walking toward Tekala, I saw from a distance that they had both spread their straw in the sun to warm it. They did this once in a while to remove the moisture from it. ओके जो भी स्ट्रॉज वगैरह होते थे वो धूप में डाल देते थे ताकि जो डैम्पनेस है या कोई भी मॉइस्चर है वो सब हट जाए. कहते when I approached their house I found that they were wrestling, 2 naked old sadhus wrestling fiercely. I intervened and said, what is this? They stood apart and one of them said, he stepped on my straw. What he must think of himself. He thinks that he's the greatest renunciate in the world. स्वामी जी कहते इस तरह दोनों साधु, वैसे भी वो उनकी उम्र से ज्यादा थे, बूढ़े थे, तो इस तरह से कुश्ती फियर्सली लड़ रहे थे. तो मेरे को बीच में I had to meddle, I had to butt into the affair just to ask, what's happening. तो इस तरह से एक दूसरे को वो बुरा भला कहने लगे. तो दूसरा कहता he thinks that he's the greatest renunciate in the world. This experience was a setback in my life. स्वामी जी कहते इस एक्सपीरियंस ये सेटबैक ही था, तो मैं हिल गया ये देख के ये क्या है. कहते हैं I started analyzing the path of renunciation. I realized, ये बहुत बड़ा लेसन स्वामी जी को सीखने को मिला. कहते हैं I realized that even after renouncing wealth, home, relatives, wife and children, one cannot easily renounce the lust for name and fame. कहते हैं ऐसा होता है कि चाहे आपने दुनिया की दौलत छोड़ दी हो, घर छोड़ दिया हो, रिश्तेदार, अपनी पत्नी, बच्चों को, पर ये जो आप में एक लस्ट है ना अपने नेम की, फेम की, कई बार वो नहीं छूटती. कहते nor can one easily purify the ego and direct his emotions towards self-realization. Cultivation of a new mind is necessary step for enlightenment. Mere renunciation brings unhappiness and frustration.
सिर्फ renunciation नाम की हो वो तो आपको unhappiness दुखी ही करेगी, and you gotta be really really frustrated. कहते renunciation without being aware of the purpose of life creates problems for the renunciates and for the people of the world who look for examples from them. देखो आपने सब कुछ छोड़ दिया, कोई पर्पस है नहीं आपका, तो कहते क्या फायदा फिर उसका। और और फिर क्योंकि जो लोग हैं ना, दे लुक अप टू दिस काइंड ऑफ पीपल, तो उनके लिए तो दे गोना सेट वेरी बैड एग्जांपल। कहते the people of the world think that renunciates are the best examples to be followed, but I have met many householders who are far superior to renunciates. The inner condition is more important than the external way of living. तो ये बहुत अच्छा इस चैप्टर में सीखने को मिला कि हाँ, स्वामी जी कहते हैं मैंने तो कई ऐसे गृहस्थ आश्रम वाले देखे हैं जो इन लोगों से ऊपर हैं, क्योंकि जो इनर कंडीशन है ना, जो अंदर की अवस्था है, वो ज्यादा मैटर करती है एक्सटर्नल से। ऐसे हमने देखे बहुत साधु महात्मा जो छोड़ देते हैं, पर उनमें लस्ट ऑफ पावर होती है, लस्ट ऑफ फेम होता है, लस्ट फॉर मेनी थिंग्स होती है, फॉर वेल्थ भी होता है, तो वो फिर कोई फायदा नहीं है। ये जो रिनाउंसिएशन वाली फीलिंग है ना, वो अंदर की अवस्था होती है, वो आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी इसको आप कर सकते हैं, मतलब दुनिया में रह के भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज in the world and yet above. So very beautifully described, you know, कि दुनिया में रहते हुए भी उससे ऊपर रहना सीखो। इधर गुरु जी कहते ना, कमल की तरह रहना चाहिए। कमल कीचड़ च भी रह के अपने आप को ऊपर रखता हैगा, तो इस तरह से ही कमल की तरह रहना चाहिए। On the face of it, it may seem that some swamis in India are given whatever they need without doing any labor, but this is not so. Actually, there is a public persecution of swamis going on all the time in India. कहते कहने को तो लगता है ना कि स्वामीज को सब कुछ मिल जाता है, उनको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, पर नहीं, वो हर बारी लोगों की नजरों में रहते हैं। कहते people think that a swami is not a human being. Everyone expects him to live a superhuman life and disturbs him. कहते लोग क्या सोचते हैं कि स्वामी तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं है, तो कोई सुपर ह्यूमन है, तो उसको तंग करते रहते हैं लोग। People come and say, you have to speak at such and such a place, you have to see me, you have to heal this person, and so on. If a swami does not live according to their expectations, they will say, what kind of fake swami is he? तो लोग तो बस ये सोचते हैं ना, कोई स्वामी बन जाए तो बस हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे, या इधर आके भाषण दे, इधर प्रीच करे, ये करे वो करे, और बस जैसा हम चाहते हैं वैसा जिए। It is common assumption in India that swamis don't need food or sleep because they are supposed to have transcended these needs. Because he's a renunciate, a swami should not feel hunger, should not have money, and if it's cold, he should not have a blanket. People have this notion, and we have to live according to it at the cost of sleep, food, and everything. तो स्वामी जी प्लाइट बता रहे हैं स्वामीज की भी क्या होता है। लोग सोचते हैं सुपर ह्यूमन है, इनको क्या जरूरत है, ना इनको भूख लगती है, ना पैसा चाहिए, ना कोई गर्म कपड़े चाहिए। तो कई बार लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पार करने के लिए उनको वैसा बिहेव भी करना पड़ता है। The being of Swami is not an easy job. There is indeed constant persecution, even if well intended. In India, wherever Swamis go to, people out of sheer enthusiasm come with drums and chant continually. Some days I would walk as many as 20 miles on foot. In the evening I would be very tired. तो देखिए बहुत टफ होती है स्वामी की लाइफ भी। जहां भी वो आते हैं तो लोग इतना जोश से ड्रम्स बजाते हैं, चैंट करते हैं। स्वामी जी कहते हैं मुझे 20 माइल चलना पड़ा है, and I would feel so worn out, so tired. It was the only chance I had to rest, and I would have to get up early for meditation, but the people would come and chant for several hours, and if I asked them to go, they would say, no sir, we want to chant for you. I needed sleep. स्वामी जी कहते वो समझ ही नहीं पा रहे थे, मुझे नींद चाहिए थी, बस उनको था कि बस हम अपना भजन कीर्तन या चैंट करते रहे। स्वामी जी कहते I needed sleep and they wanted to chant, so I learned to sleep while they chanted, and the drums and everything going around me. तो स्वामी जी के पास कोई चारा नहीं था, he had no choice. तो जहां ड्रम्स की आवाज आती थी, चैंट शुरू हो, स्वामी कहते फिर मैं तब उस दौरान मैं अपनी नींद पूरी कर लेता था। When they close their eyes in chanting, I close my eyes in sleep. You have heard of what is usually called sleepwalking, but there is another kind of sleepwalking of which you have not heard. I learned to sleep with regard to the things which were distracting me, and to walk only on my path, no matter what happened. I went on. तो स्वामी जी थोड़ा हंसी मजाक में बोलते हैं, कहते आपने स्लीप वॉकिंग तो सुना होगा ना, मेरी तो स्लीप वॉकिंग फिर ऐसे ही हो जाती थी। Okay, decide that no matter what happens, you will do what you set out to do. If you're determined,
possible distractions will still be there, but you will continue on your path and remain undisturbed. Sankalpa, determination is very important. You cannot change your circumstances, the world, or your society to suit you, but you have strength and determination. You can go through this procession of life very successfully. तो इसके एंड में भी बड़ी अच्छी चीज सीखने में मिली. देखो, दुनिया भी वही रहेगी, लोग भी कई बार वही रहते रहे, सर्कमस्टांसेस भी वही रहते हैं, नहीं बदलते. कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसी रहती है, बहुत चीजें होती नहीं बदलती. उस टाइम क्या काम आता है? संकल्प, डिटर्मिनेशन. और डिटर्मिनेशन भी गुरु जी की कृपा से ही आता है कि देखो, हम अपनी सर्कमस्टांस तो नहीं बदल सकते ना, सोसाइटी को जैसे भी है, बट अगर हम शक्ति मांगते हैं, डिटर्मिनेशन मांगते हैं, तो फिर हम इसको अच्छी तरह से इसको पार कर सकते हैं. Next is to lose is to gain. कहते, there was once a Swami who used to go and stay with his disciple. The disciple's whole family loved and revered the Swami because he was an example of discipline and a very spiritual man. He always got up before sunrise, bathed and sat for hours in meditation. तो स्वामी की बात कर रहे हैं जो अपने डिसाइपल के साथ रहते थे, और डिसाइपल की सारी फैमिली उनको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन थे, सनराइज से पहले उठ जाते थे, नहाते थे और अपनी मेडिटेशन में बैठते थे. कहते, but one day early in the morning while it was still dark, he shouted, "Hey, get me food." His disciples said, "Sir, this is your bath time. This is your bath time." उनको भूख लगी हुई थी, तो वो उनके डिसाइपल कहते, शिष्य कहते, नहीं नहीं, अभी तो आपने नहाना है. This is your bath time. The Swami replied, "Just get me food. I'm hungry." He ate and then he took a bath. After his bath, he went to empty his bowels and then he went to sleep. He made everything topsy-turvy and the whole house was upset. They said, "Something has happened to him. He's gone crazy." The wife said, "Our master is a wonderful man. We should help him." So they called for doctors and told them, don't disturb him by saying anything about medicine. Say, we want to learn from you. Be courteous, please. तो उनकी जो उनके मास्टर थे ना, मतलब ये जो उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं, हमारे मास्टर तो बिल्कुल ठीक है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए. तो उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया और उनको बोला कि डोंट डिस्टर्ब हिम बाय सेइंग कि आप मेडिसिन देने आए हो, बस ये बोलो कि हम तो कुछ सीखने आए हैं, और बड़ी उनको रिस्पेक्ट दीजिए. बी courteous please. कहते, the doctors came and behaved like disciples because they were paid for that purpose. उनको तो पैसे दिए गए थे ना उस चीज के लिए. कहते, they said, "Gurudev, how are you?" But he wouldn't respond. They thought he was in coma because he was not moving. One looked at his eyes and there was no movement. Another found that there was little pulse. One said to another, "I don't think he's going to live." A third doctor took out a stethoscope and found the heartbeat decreasing. So he reported, "He has a failing heart." The woman of the house started weeping because she had always looked on him as her spiritual father. तो जो घर की औरत थी वो तो जोर से she started crying bitterly. कहते, finally I was asked to come. When I entered, he sat up. जैसे मैं अंदर आया वो उठ गए. And I asked Swamiji, "What is the matter?" He said, "Nothing is the matter. Why do you ask?" I told him, "Everybody is worried." कि सब लोग चिंता में हैं. स्वामी जी, आपको क्या हो गया है? They are just worried about you. He said, "I used to meditate for two things. मैं दो चीजों के लिए meditate करता था. But today my parents died and I'm in sorrow, so I'm not meditating. His language is entirely mystical. वो मास्टर कहते मैं दो चीजों के लिए मेडिटेट करता था, पर आज मेरे जैसे लगता है माता पिता की डेथ हो गई है, मैं दुखी हूँ, मुझे जरूरत नहीं मेडिटेशन की, क्योंकि मैं दो चीजों के लिए तो मेडिटेशन करता था. तो स्वामी जी कहते हैं, his language was sounding little mystical. I said, "Your parents died. You're a Swami. You have nothing to do with parents." तो वो क्या बोलते हैं? No, he said, "You also have parents. When they die, you will understand." तो उन्होंने स्वामी जी को क्या कहा कि तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं, जब वो नहीं रहेंगे तब तुम्हें समझ आएगी. He continued. अब वो जिनको उन्होंने पेरेंट्स कहा था, वो असल में वो क्या कहना चाहते थे? वो कहते, "Attachment was my mother and anger was my father." बहुत अच्छा समझा रहे हैं. मेरी माँ जैसे, वो अटैचमेंट को मैंने अपनी माँ माना और फादर को मैंने एंगर माना. कहते अब आज दोनों मर गए हैं. So I have nothing to do. Now I do not need to do anything. Meditation will become your very nature when you give up attachment, anger and pride. कहते जब आपकी जिंदगी में अटैचमेंट और एंगर और प्राइड चले जाए ना, ये मेडिटेशन के बराबर, it's just like a wakeful meditation. Then you will not have to pose for meditation. ये नहीं कि आप एक
पर्टिकुलर पोस्चर में बैठेंगे वही मेडिटेशन होगी, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी मेडिटेशन बन जाएगी. फॉर योर होल लाइफ विल बी अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. इसमें यही सीखने को मिला है कि ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं और चलो जी हम बड़े ध्यान में बैठ जाएं और उसके बाद हमारे पास अटैचमेंट भी है, हमारा गुस्सा भी नहीं गया, हमारा अहंकार भी नहीं गया, तो क्या फायदा. अगर ये चीजें हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निकाल दें तो आई थिंक every second, every minute becomes your meditation, and it's like meditating on good things, and it's like a wakeful meditation. वो बहुत जरूरी है. एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना मेडिटेशन नहीं होता. जिंदगी ही अगर मेडिटेशन बन जाए, जैसे गुरुजी कहते ताही गल बनू. Okay, next is chapter 7th. Experiences on various paths. कहते this section of the book is primarily from Swamiji's diaries. हमने पहले भी हमें शुरू में था कि स्वामी जी जहां जाते थे, he would carry his diary or a notepad and he would just jot down all the experiences he would take, and उसी experiences के कारण ये किताब आई है. Had he not written, had he not jotted down, then we would be sitting here and reading this amazing book. Okay, next, knowledge of various paths leads you to form your own conviction. The more you know, the more you decide to learn. When you have sharpened the faculty of discrimination, you firmly tread your path without any doubts. अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है A Renowned Lady Sage. ये अब जिस संगत जी जिस आनंदमयी माँ की बात कर रहे हैं वो अपना ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में चैप्टर 45 में द बंगाली जॉय परमिटेड मदर के बारे में है. उनके भी किताबें पढ़ी हैं. फुल ऑफ डिवाइन, जब उनकी शादी हो गई थी बड़ी यंग एज में, बिकॉज वो तो हमेशा से अपने आप को मतलब शी इज यूनिवर्सल मदर. तो जो उनके हस्बैंड थे थोड़ी बड़ी उम्र के होते थे, एंड वेन एवर ही वुड वांट टू टच हर तो माता जी की बॉडी ऐसे हो जाती थी कि बिल्कुल ही वो डिस्ट्रॉर्ट कर लेती थी, बिकॉज उनका पर्पस ही दुनिया में दूसरा था. उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती थी, कई बार अपनी बॉडी को डिफॉर्म कर लेते थे, कई बार वो लंबी भी हो जाती थी, बिकॉज हर पर्पस वाज डिफरेंट. वो मतलब और हमेशा से अपनी समाधि जैसे आंखें ऊपर करके ही बैठे रहते थे. और बहुत बहुत प्यारी उनकी भी कहानियां हैं. तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी उनका वर्णन है. चैप्टर 45 द बंगाली जॉय परमिटेड मदर, और इनका नाम पहले निर्मला होता था. और वो हमेशा अपने आप को फील करते थे कि डीप मेडिटेशन में जब मैं हूं तो जो मेरी हाईएस्ट सेल्फ है वो गुरु है, जो मेरी लोअर सेल्फ है वो डिसाइपल है. खुद ही वो अपने गुरु और खुद ही अपने आप से डिसाइपल बन जाते थे. ओके, और हमेशा वो ये भी कहते थे हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, क्योंकि इससे आपकी जितनी भी टेंशन्स हैं वो कम हो जाती हैं. तो जैसे अब ये जितने भी होते हैं इनकी बॉडी तो बॉडी होती ही नहीं है. तो एक बार इनके डिसाइपल ने कहा कि माता जी इतने दिन हो गए अपना नहाए ही नहीं, तो उनकी बॉडी तो में तो अभी हमेशा फ्रेग्रेंस आती रहती थी. तो उनको जब ये सुना, ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने सुनी कि ऐसा किसी ने बोला है, तो फिर वो एक दिन 30 बारी नहाए, मतलब एक ही दिन में. तो जितने भी सेंट्स होते हैं उनके वेज बहुत बहुत मिस्टिकल और बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं. Okay, the chapter starts, A Renowned Lady Sage. Okay, we two young aspirants, Nandin Baba and I, lived in the Laria Khanta forests of Nainital when I was 16 years of age. At that time, Anandmai Ma, a well-known spiritual leader of India, was going on a pilgrimage with her husband. और ये भी है कि बाद में उनके हस्बैंड ने जब देखा ना कि मेरी इच्छाएं इनको लेके कुछ और थी, तो बाद में उनको पता लगा वो खुद अपनी वाइफ के डिसाइपल बन गए थे. Although they traveled together, they did not have the usual husband-wife relationship, but had mutually developed an understanding of the value of abstinence and had decided to live as celibates. देखो इनका मैंने ये भी पढ़ा था, क्योंकि इनके हस्बैंड शुरू में आनंदमयी माँ को मारा भी बहुत है, ब्लैक एंड ब्लू उनको लगता था पता नहीं शी इज पोजेस्ड बाय अ डीमन. तो पर माता जी कहते थे थोड़े 2 साल रखे जो तुम्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि उनके डेविटीज इतने बढ़ गए थे. पर उनके हस्बैंड ने कहा नो, शी इज नॉट पोजेस्ड बाय डीमन, शी इज पोजेस्ड बाय गॉड ऑलमाइटी. तो वो खुद उनके डिसाइपल बन गए थे. कहते they were both in their 40s and were totally dedicated to the Lord. On this pilgrimage, they were accompanied by a large group of followers and were traveling from Mansarovar to Kailas, which is near Mount Everest, the highest of the Himalayan mountains. A pilgrimage to this site is considered to be the greatest of all, and on the way, the people aspire to have a glance of the sages and to meet the adepts. तो वो तो है ही है.
इस साइट पे जब वो जा रहे होते थे, ये जो रास्ते हैं मानसरोवर टू कैलाश और माउंट एवरेस्ट, जो भी शरणार्थी जाते हैं उनको यही होता है कि हम सेजिस के दर्शन कर सके। कहते आनंद माई माँ हर्ड अबाउट अस टू यंग रिनाउंसिएट्स एंड केम टू विजिट अस ऑन हर वे टू कैलाश। तो नंद माई माँ खुद आए इनको दोनों को मिलने। एक नंतिन बाबा जी जो इनके अपने डिसाइपल साथ में रहे हैं, और नॉट डिसाइपल, उनके जो साथ में वो भी स्वामी रहे हैं, और ये स्वामी रामा जी खुद। तो आनंदमयी माँ खुद इनको मिलने हैं। When she returned from Kailash 2 months later, she again passed through Nainital, and at that time we met her again and attended her group meetings in the evenings. That she was a follower of this path of love and devotion and regularly offered discourses on the path of her large following. There are many paths to enlightenment generally referred to in yoga, but actually there are 6 main paths. तो 6 कहते वैसे तो बहुत सारे paths होते हैं, पर 6 main paths कौन से हैं? And Bhakti Yoga, the path of devotion, is one of them. This path of love is a path of self-surrender, and music is one of its devotional expressions. Bhakti Yoga is based on self-sacrifice, reverence, and compassion. In this path, humility, gentleness, purity, simplicity, and sincerity are important virtues. कहते हैं हाँ, जो भक्ति योगा है ना, उसमें सेल्फ सेक्रीफाइस भी चाहिए, रेवरेंस चाहिए, कंपैशन चाहिए, उसमें आपका नम्रता चाहिए, जेंटलनेस चाहिए, प्योरिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी, ऐसे वर्च्यूज चाहिए। कहते हैं इट इज द पाथ ऑफ द हार्ट. दिस मीन्स दैट द फॉलोअर्स direct the power of emotion toward God. Many on this path start flowing tears when they hear talk of God or when they assemble for chanting. Philosophically, the aspirant on this path does not want to merge his individuality in God, but prefers to have a separate identity and to be always in the service of the Lord. कहते इस बात पे है, ये नहीं होता, उनकी ये मंशा नहीं होती कि हम गॉड के साथ मर्ज हो जाए, पर नहीं, चाहे सेपरेट आइडेंटिटी रहे, पर हम अपने प्रभु के चरणों की सेवा करते रहे। कहते the philosophy of liberation according to this path is nearness to God. Liberation means attaining status in the celestial plane where one can constantly remain near to God. Many follow this path, but it is not as easy to follow as most people think. Bhakti yoga is not the path of blind followers. उसके बाद फिर वो हमें बताने जा रहे हैं, Jnana yoga is a path of knowledge, and it's called the yoga of the intellect. This study involves not merely the cognitive intellect, but rather the intellect which has been sharpened by listening attentively to the sayings of the great sages as they are taught by a competent teacher, and then contemplating on these sayings to finally attain a state of freedom. This path is like the razor's edge, and if one does not tread it with discipline, it might become egoistical. Constant company of the sages and contemplation with the help of non-attachment are important requisite in this path. तो ये जनन योगा के बारे में, ये ठीक है आपको अपने सेजेस की कंपनी भी हो और साथ साथ आपका नॉन अटैचमेंट भी हो, ये ये 2 चीजें चाहिए इस पाथ पे। Third is karma yoga, is a path followed by those who believe in doing duties selflessly. These aspirants understand that all the fruits of one's actions should be surrendered to God. जो भी आपके कर्म है वो ईश्वर को अर्पण कर देते हो, who dwells in everyone's heart. Selfless action performed skillfully liberates one from bondage created by fruits therein. Knowledge of karma yoga is essential to attaining liberation. Karma yoga यही है ना कि अब अपना कर्म करो, बस फल की इच्छा मत करो। कहते by performing right actions which do not create bondage and by attaining higher knowledge, one liberates oneself from the rounds of birth and death. उसके बाद वो हमें कुंडलिनी योगा कहते हैं। कुंडलिनी योगा is one of the aspects of yoga which is practiced by those who understand a great deal about the body and the nervous system and the various channels of energy in the human body. The special disciplines that help the aspirant to control his bodily functions and internal states are essential. The primal force which remains in the sleeping state at the base of the spinal column. तो हमें पता ही है वो अपने स्पाइन की रीढ़ की हड्डी के नीचे जो होता है, कहते जब इसको consciously awaken करते हो ना, it's consciously awakened and led through the Sushmana to the highest of the chakras, where the Shakti principles unites with the Shiva principle. Sushmana is the most subtle channel on which the primal force travels. Without its application, that Kundalini force cannot rise. The chakras are the wheels of life used for the subtle body.
Shakti is the divine mother who manifests the universe. She is the universal power which can function only through that mother force. तो होता है ना, कई ऐसी टेक्निक होती है मेडिटेशन की जहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है सुषुम्ना से, जो आपका सटल चैनल होता है जहां पर ये फोर्स ट्रेवल करती है। उसके बाद कहते हैं राजयोगा। राजयोगा is a path of systematic discipline which leads the student upward along the 8-rung ladder to a state called samadhi, or union with the absolute reality. This is the most comprehensive path and is highly systematic and evolved science in which karma, bhakti, kundalini, and jnana are combined. The philosophy of Raja Yoga is based on Sankhya philosophy. तो ये राज योगा के बारे में हो गया, उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए और उसमें भी अपनी जो अवस्थाएं होती हैं, तब आप उसमें जैसे भी राजयोगा का अपना सिस्टम होता होगा, इट्स ऑल्सो लाइक हाईली सिस्टमैटिक एंड इवॉल्व साइंस। कहते श्री विद्या इन विच द माइक्रोजम एंड मैक्रोजम, I'm sorry. Sri Vidya is which the microcosm and macrocosm are thoroughly understood, is the highest of all the paths, and is practiced by only few accomplished ones. So Sri Vidya ऐसी है जिसमें microcosm and macrocosm कहते, इसको पूरी तरह समझा जाता है, ये highest होती है paths में से. It is a practical path, but it requires strong philosophical understanding before it is trodden. Practice based on the mere information of books could be time-consuming as well as dangerous. A competent teacher is necessary in the spiritual practice, and the principles of Tantra and other philosophies need to be thoroughly understood before a student takes such a venture. This extremely rare path is followed only by highly accomplished sages. तो हमने देखा इन्होंने हमें ये जो कर्म योगा के बारे में भी बताया है, भक्ति योगा के बारे में बताया, जनन योगा के बारे में, कुंडलिनी और सुषुम्ना, राज योगा, उसके ऊपर जो श्री विद्या है वो कहते हैं सबसे ऊपर है। ये आप किसी के गाइडेंस में हाईली अकम्प्लिश्ड जो सेजेस हैं उनसे ही आप सीख सकते हैं। कहते नंदिन बाबा and I attended a gathering of Anandmai Ma students in which everyone was chanting in Bengali and Hindi. We enjoyed listening to the chants but felt more like observers than part of the group. कहते ठीक है, जो नंदमाई माँ की वो जो मंडली थी और जो भक्त थे वो सब चैंट कर रहे थे, तो हमें मतलब हमें सुनना ज्यादा अच्छा लगा, मगर हमें लगा कि we are good as observers, you know. We were both more inclined toward meditation and were on the path of Raja Yoga and Jnana Yoga, although we also appreciated the other paths. If a person follows one path, it does not mean that he hates the other paths. Nonetheless, one of Anandmai's Ma students came up to us and tried to convince us that the path of devotion was the highest one and that we should switch to it. तो आनंदमय माँ के जो स्टूडेंट हैं उनके पास आए कि देखिए ये जो डिवोशन का पाथ है ना वो सबसे ऊपर है, आप अपना इसको आप बदल के ये वाला पाथ ले सकते हैं। He asked why you're not participating in the chanting. I told him the horse that pulls the buggy does not enjoy pulling it, but the person who's sitting in the buggy enjoys the ride and benefits by witnessing and sitting quietly. तो बड़ा Swamiji gave a very judicious, he just quipped. He said कि जो घोड़ा है जो पुल कर रहा होता है बगी को वो थोड़ी एंजॉय करता है, जो बैठने वाला है जो सीट पे बैठता है उस बगी के तो वो ही एंजॉय करता है ना। तो यही है, हम भी उसी तरह से विटनेस कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, sitting quietly. The person who is performing the action does not enjoy it as much as a wise man who is witnessing it. Some people chant and others enjoy chanting silently. We are enjoying more than anybody else. How do you know that we do not follow the path of devotion? In his ignorance, the student was very adamant that his path was the only one. Our discussion soon led to an argument, and Anandmai Ma intervened by saying to her follower, don't argue with these two young renunciates. One should try to understand one's own inner worth and then follow the path best suited to him. तो Anandmai Ma बहुत शांति से भाव से उन्होंने किया, कहते फोर्स क्यों कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो, कहते हर एक को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अपनी इनर वर्थ के अनुसार उनको जो भी पाथ सूट करता है वो चूज करना चाहिए। और the path of devotion does not mean dumb devotion. Devotion means total dedication, surrender and love for the Lord. कहते it is the path of the heart. उन्होंने डिवोशन का ये जो भक्ति का मार्ग बताया, कहते इसको ऐसे मत सोचो ये ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ये डम डिवोशन नहीं है, ये दिल की डिवोशन होती है, ये हार्ट की डिवोशन है, इट्स अ पाथ ऑफ हार्ट। कहते बट इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दैट इंटेलेक्ट और रीजन व्हिच सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. Devotion is also a part of
the other paths. It's not possible for the Jnana Yoga to attain enlightenment if he does not also have devotion. Everyone wants to follow bhakti, the path of devotion, thinking that it's very easy and simple. कहते पर भक्ति आपको लगता है आसान है, पर ये आसान इतनी है नहीं, but that's not true. कहते the path of devotion means accepting the existence of Lord instead of worshipping one's own existence. उसमें आप नहीं रहते हैं, आप सिर्फ प्रभु की एग्जिस्टेंस को पूरा महत्व देते हैं, उसी में आप रम जाते हैं. कहते those who weep, shiver, become emotional, or act in a funny way cannot be called the followers of Bhakti Yoga. The tranquility of mind should be cultivated, then all the paths can be understood. तो बहुत ही अच्छा रनमय माँ ने बताया. कहते ऐसा नहीं है कि आप रोने से, शिवरिंग करने से, बहुत इमोशनल करने से और बहुत फनी है एक्ट करने से आप बोलो जी आप ये भक्ति योगा ये होती है. कहते ये नहीं होता. ट्रैंक्विलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, मन की शांति चाहिए. The tranquility of mind should be cultivated, then all the paths can be understood, and not before that. The purification of the mind is necessary and is achieved by disciplines, one mind, action, and speech. Argumentation is a state of learning and not a state of being. I remember her remarkable discourse even today. तो कितने प्यार से आनंदमयी माँ ने, माता जी ने सब कुछ समझाया. कहते आर्ग्यूमेंटेशन क्या है? ये कोई इट्स अ स्टेट ऑफ लर्निंग. ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग थोड़ी है. स्टेट ऑफ बीइंग तो होता है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड. कहते आई स्टिल रिमेंबर हर रिमार्केबल डिस्कोर्स इवन टुडे. आई आस्क्ड हर, is it true that your path is superior to other paths and that only what you're doing is authentic? Do you think that others are wasting their time? तो स्वामी जी ने ऐसे उनको प्रश्न किया कि आपको लगता है आपका पाथ सुपीरियर और बाकी सब अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? She replied, my path of devotion suits me. ये मुझे सूट करता है, but do not change your paths. Those who do not have guidance become confused and often change their paths. कहते जिनको अच्छी दिशा नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिलती, वो अपने भटकते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं पाथ. कहते a confused mind is not fit to follow any path. ये तो गुरुजी भी कहते हैं ना, जब ऐसे मिलना संगत में आना, गुरुजी कहते हैं कंफ्यूज्ड हैगा हल्ले, कंफ्यूज्ड हैगा, हल्ले मेरा कच्चा है भगत हैगा, पक्का भगत हैगा. तो यही है, a confused mind is not fit to follow any path. Seekers of truth should learn to search for competence and guidance by seeing certain signs and symptoms in the teacher, such as selflessness, truthfulness, sincerity, and control of mind, action, and speech. ये तो सही बात है, सेल्फलेसनेस, सच्चाई, सिंसेरिटी, और जिसका कंट्रोल हो गया ना माइंड, एक्शन, स्पीच पे, तो मुझे लग रहा है कि वो तो half the barrel is won actually. Almost 90% barrel is won if you can control your mind, action, and speech. जो कि गुरु जी की कृपा से आता है. Students also commit mistakes when they become idealistic without observing the capacity or following any discipline. They see only what they want to see. This prevents them from learning and they get attached to the path which they think they are following. They become very fanatical and egoistical and even begin fighting with people. This can happen to any seeker if his inferiority complex goes on developing and creating boundaries, closing all the doors of knowledge, and making him self-centered, uncommunicative, and egoistical. देखो जब आप बहुत फैनेटिक हो जाते हैं ना, ईगो से भर जाते हैं, तो वो फिर चाहे वो किसी भी पाथ पे चलो, चाहे भक्ति योग है, कोई है, तो वो सब दरवाजे बंद ही होने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें इस तरह से नहीं आती हैं. कहते Ma confirmed our ideas and strengthened those principles which we were following. She said, learning the scriptures is very good and helpful, but without satsang, such learning can also make anyone egoistical. ये बहुत सही बात बोली आनंदमयी माता जी ने. ठीक है, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो भाई, अच्छे भी हैं, मदद भी करेंगे, पर सत्संग के बगैर, अगर सत्संग में नहीं बैठे या सत्संग नहीं आपको सत्संग में आपने अपने आप को नहीं रमा, तो ये मेयर जो लर्निंग है ना, किताबी नॉलेज, ये भी आपको अहंकार में डाल सकती है. कहते a learned man having satsang is very humble, communicative and gentle in his behavior. जब हम सत्संग में बैठते हैं ना, उसका आनंद ही अलग आता है. The beginners often argue and boast about the superiority of their way, but one who has trodden the path knows that all paths lead to the same destination. सही बात है, इन चीजों में आर्ग्यू करने में, बोस्ट करने में, शेखी बगाड़ने में कुछ नहीं है. जिसको पता है ना, सब पाथ, कोई भी पाथ ले लो, डेस्टिनेशन तो एक ही है ना, डेस्टिनेशन सभी की है. As God is one, light is one. There is no superior or inferior path. It is immaterial which path one follows, but one should carefully watch one's own modifications of mind and learn not to identify with them
As she stared at the eyes of her husband, which were like cups of wine full of devotion, we said goodbye to Anand my ma, and I went to a quiet place where I used to hide myself. तो अनंत महिमा जी ने बहुत बहुत अच्छी तरह से सब इनको समझाया कि बात तो कोई भी ले लो, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बात छोटा बड़ा है, बट जब तक you're not conscious of your mind action and speech, then it's not good, you know, it's not going to serve the purpose. और दूसरी चीज है कि सभी बात एक ही बात को लीड करते हैं, one God Almighty. Okay, next chapter is with my heart on my palms and tears in my eyes. कहते in India, Hindus, Christians, Muslims, Sikhs, Parsis and Sufis have lived harmoniously for many centuries. ये सब बहुत peacefully रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म से वो रखते हो. कहते India is a melting pot. Whoever visits India gets into this pot. This has been the history of Indian civilization. In the subcontinent of India, people were peaceful, but the aliens who ruled India created hatred among the various religious groups because of the policy of divide and rule. Definitely, ये हमें पता है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. आपस में तो इंडिया के लोग बहुत प्यार से रह रहे थे, but जब बाहर से वो आए उन्होंने divide and rule कर दिया, and they created and they started filling people's heart with hatred, and because they used to detest how they are living harmoniously, so they adopted the divide and rule and created rift, disharmony among people of India. Okay, the Sufis from all over the world go to India to pay homage to Indian Sufis. Even today, India is the home of Sufism. Sufism is a religion of love and is not followed by Mohammedans exclusively. Among the several Sufi sages I have met, one of the greatest was a woman who lived in the city of Agra, 120 miles away from Delhi. तो कहते हैं कि ये नहीं है कि सूफी सिर्फ मोहम्मदन्स के लिए ही है. सूफी तो क्या है, ये तो एक रिलीजन ऑफ लव है. तो इसी तरह स्वामी जी आगरा में एक वुमेन से मिले. Okay, Agra, 120 miles away from Delhi. The city is famous because of the Taj Mahal, a symbol of love and one of the wonders of the world. Once I traveled from the Himalayas to visit this old woman sage who lived completely naked in a small dargah, dwelling and worshipping place of a holy Muslim fakir. She was 93 years of age and never slept at night. I used to call her BBG. This word is used for mother. She would call me my son, Bete. During my stay at Agra, I regularly visited the Sufi women sage between 12 and 1 in the morning. My visiting BBG at nights was misunderstood so much that people started thinking I had lost my equilibrium. लोग सोचते थे पता नहीं ये क्यों रात को मिलने जाते हैं, शायद इनका दिमाग खराब हो चुका है, ऐसे imbalance हो गया है mind. Several high army officials and learned people also used to visit her. Colonel J.S. Khera was her great devotee. Although she was adored by Hindus and others equally, many people in the city did not understand this great Sufi mystic and her mysterious way of living. कहते बहुत सारे भगत थे उनके, बहुत आर्मी ऑफिशियल्स भी आते थे. कहते उनको हिंदूज भी उसी तरह प्यार करते थे जिस तरह मुस्लिम, पर जो शहर के लोग थे ना, वो उनके जो मिस्टीरियस वे थे ना उसके बारे में अवेयर नहीं थे. और कहते her compassion towards her visitors was immense, but her attitude towards the mundane world was self-explanatory. The people of the world have learned how to fill up earthen bowls with grains and coins. तो कहते ये बड़ा अच्छा सीखने को मिल रहा है. कहते जो दुनिया के लोग हैं ना, the people of the world have learned how to fill up earthen bowls and grains and coins, but no one knows how to fill the bowls of the heart. Okay, one night, BBG told me that it would be easy for me to meet God. I asked, what is the way? She said, to be one with the divine. बीबीजी उनको बोलते हैं आसान है भी ईश्वर से मिलना. तो मैंने कहा रास्ता क्या है? वो कहते हैं बस एक हो जाओ. To be one with the divine, one has simply to detach oneself from this mundane world and be linked with the beloved. It is so simple. Offer your ruh, offer your soul to the Lord, and then there is nothing to be done or realized anymore. बीबीजी कहते हैं अपनी आत्मा को अर्पण कर दो, और ये जो दुनियावी चीजें हैं ना इन पे मत पड़ो ज्यादा, अपनी आत्मा को ऑफर कर दो. I said, BBG, but how? She started using a dialogue. I'm narrating it exactly as she related it to me. स्वामी जी कहते हैं मैं उस तरह से बिल्कुल बताऊंगा जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया था.
Okay. She said, as I went to see my beloved, he asked, who is that standing at the entrance of my shrine? I said, thy lover, Lord. The Lord said, what proof can you give? I said, here is my heart on my palms and tear in my eyes. तो वो कैसे एग्जाम्पल देती हैं? कहते मैं अपने बिलवर्ड को देखने गई. He asked, who is that standing at the entrance of my shrine? I said, thy lover, Lord. ईश्वर, मैं आपकी आपकी मतवाली हूँ, आपकी दीवानी हूँ. The Lord said, मुझे प्रूफ तो दो. तो मैंने कहा, ये देखो दिल जो मेरे पाम में है, मेरी हथेली पर है, और जो मेरी आंखों में आंसू हैं, यही तो मेरा प्रूफ है. And the Lord said, I accept thy offering, for I also love thee. Thou art mine, go and live in the दरगाह. तो ईश्वर ने उसको क्या कहा, ठीक है, तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हारा हूं, अब तुम दरगाह में रहो. Since then, कहते, my son, I live here. I wait for him day and night, and I will wait for him till eternity. तो वो जो सूफी सेंट है, वो कहते हैं, मैं दिन रात अपने ईश्वर का इंतजार करती हूँ, मैं करती रहूंगी. देखो ये प्यार होता है इनका, यही तो है ना, ये है प्यार करने वाले. तभी तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं कि तुसी मैनू की प्यार कर दो, कुछ नहीं कर दो. देखो दुनिया कितना बैठी हैगी है, वो तो सोंदे भी नहीं, उनका कुछ भी नहीं है. मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि कितने सेंट्स हैं जो बिल्कुल नेकेड रहते हैं, वो तो कपड़ा भी नहीं ओढ़ते कि हमारा है ही क्या, कुछ भी नहीं. वो मतलब हर पल उस उसमें डूबे हुए हैं परमात्मा के, अपने सच्चे यार के प्यार में. I remember the words of a great man who said, this poisonous tree of life has but two fruits, contemplation on immortality and conversing with the sages. ओके. कहते मुझे एक ग्रेट मैन की वर्डिंग याद आ रही है. स्वामी जी कहते, दिस पॉइजनस ट्री ऑफ लाइफ, ये जो जहरीले जिंदगी का पेड़ है ना, इसके दो फल हैं. एक तो कॉन्टेम्पलेशन ऑन इमॉर्टैलिटी एंड कन्वर्सिंग विद द सेजेस. कहते मेनी टाइम्स आई वुड वॉच अ वेरी पावरफुल लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम बीबीजी's eyes. कहते बीबीजी की आंखों में क्या रोशनी निकलती थी. शी इम्प्रेस्ड मी डीपली बिकॉज ऑफ हर सुपर्ब डिवाइन एक्सटेसी, हर कंप्लीट सेल्फ सरेंडर. क्योंकि वो तो बस एक नूरानी नशे में रहती थी, और उनका कंप्लीट सेल्फ सरेंडर था. एंड हर unfathomable love for God. She said, the pearl of wisdom is always hidden within the shell in the ocean of the heart. Dive deep and one day you will find it. तो देखिए क्या कहती हैं वो जो सेंट हैं, फीमेल सेंट हैं. कहते जो pearl of wisdom है ना, is always hidden within the shell in the ocean of the heart. कहते बस उसमें डुबकी लगाओ, जरूर मिलेगा एक दिन. Dive deep and one day you'll find it. One day she smilingly cast off her body. A light like that of a star was witnessed by 12 of us. कहते हमने खुद देखा है वो कैसे एक सितारे की तरह रोशनी निकली उनके शरीर से. Was witnessed by 12 of us who were sitting around her. The light came out of her heart. एक उनके हृदय से लाइट निकली एंड स्पेड टुवर्ड्स द स्काई लाइक लाइटनिंग. तो देखिए वो हार्ट से रोशनी और इतनी प्यारी लाइट निकल के आसमान की तरफ चलेगी, जैसे एक बिजली की तरह चली गई. शी रिमेन्स इन माय हार्ट ऑलवेज. आई रिमेंबर माय बीबीजी विद ग्रेट लव एंड रेफरेंस. तो वाकई हमें भी पढ़ के लग रहा है कि स्वामी रामा जी के मन में इनका तो बहुत प्रभाव रहा है बीबीजी का. बिकॉज इतना सरेंडर और इतना प्यार ईश्वर के लिए कि नहीं, तब से वो दरगाह में रहती थी, और नहीं, दिन रात अपने प्रभु के इंतजार में, टोटली इमर्स्ड इन डिवाइन लव, और वो भी कभी भी नहीं सोती थी. नेक्स्ट इज कर्मा इज द मेकर. एक्सक्यूज मी. स्वामी जी कहते हैं, आई यूज्ड टू हियर अ लॉट अबाउट अ सेज कॉल्ड उरिया बाबा, who was very famous for his learning and spiritual wisdom. He lived in Vrindavan. अभी कुरिया बाबा के बारे में बता रहे हैं जो वृंदावन में रहते थे. कहते my master sent me to live with this sage, a devotee of this Baba who knew me very well, took me to Vrindavan. When I arrived there, I found hundreds of people waiting to have darshan of this great man. The Baba was informed by his devotee about my arrival. This great man was very short in stature and about 65 years of age. He was considered to be one of the greatest learned scholars of North India. He had a large following all over the country. He was very kind and generous to me. उनकी बहुत फॉलोइंग रही है, और कहते पर वो मेरे साथ बहुत kind और generous थे. In the evenings we used to go on the banks of Jamuna for evening ablutions. One evening I asked him, is renouncing the world superior to living in the world? आपको लगता है renouncing ज्यादा ऊपर है दुनिया में रहने से?
which is the right path. During those days, I had been studying the philosophy of karma. I knew that karma means cause and effect. I also knew that it's difficult to get freedom from these twin laws of karma. The Baba, in the course of conversation, told me, तो बाबा ने उनको क्या बताया? कहते हैं, बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं बाबा जी, कहते हैं, it is not necessary for all the human beings to renounce the world. ये जरूरी नहीं है कि सब ये पद लें और इस रास्ते पर चलें, इस पथ पर ये चलें या रिनाउंस कर दे दुनिया को. कहते हैं, for the path of renunciation is very difficult to tread. बहुत मुश्किल है भक्ति का ये जो रिनाउंसिएशन का जो पाथ है, बहुत मुश्किल है ये. कहते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट नेसेसरी टू रिनाउंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जरूरी नहीं है कि आपने जो दुनियावी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, उनको छोड़ना है. क्यों? क्योंकि बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट एक्चुअली ओन और पोजेस एनीथिंग. आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें रिनाउंस करनी है, क्योंकि आपका तो ये कुछ है ही नहीं, आप थोड़ी इसको पोजेस करते हो. कहते हैं, therefore it is not necessary to renounce anything, but the sense of possessiveness should be renounced. What a beautiful teaching. देखो, दुनियावी चीजें हैं, ठीक है, उनको मीन समझो, और वैसे भी आपको उनको रिनाउंस क्या करना है? आप कुछ लेके तो आए नहीं थे, आप पोजेस थोड़ी इसको करते हो. अगर आपको छोड़ना ही है ना, पोजेसिवनेस छोड़ो, जो चिपके रहते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं, और उसको छोड़ना है, उसको रिनाउंस करना है. दैट्स अ ब्यूटीफुल टीचिंग. कहते हैं, whether you live in the world or outside, it doesn't make much difference. चाहे दुनिया में रहो, दुनिया से हटके रहो, वो मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है? कहते, attachment to the objects of the world is cause of misery. बिल्कुल सही बात है. जो इस चीज की अटैचमेंट आ जाएगी ना, चाहे वो रिश्तों में अटैचमेंट आ जाए, चाहे चीजों में आ जाए, वो आपको मिजरेबल ही बनाएगा. अगर आप उसको रिश्ते नातों को भी थोड़ा डिटैच होकर निभाएं, तो वो उस तरह से फिर बंदा इतना मिजरेबल नहीं फील करता. बट विच कम्स वेरी वेरी it comes gradually, takes time. The one who practices non-attachment faithfully and sincerely obtains freedom from the bondage of karma. कर्म से आप कब बॉन्डेज को कब आप तोड़ सकते हो? जब आपने नॉन अटैचमेंट सीख लिया और कोई भी चीज है ना, सिंसियरली कर रहे हो. One who practices non-attachment faithfully and sincerely obtains freedom from the bondage of karma. Non-attachment seekhna. In the path of action, duties are not renounced but are performed skillfully and selflessly. The path of जो action है आपका, ये थोड़ी कहा कि आप अपने कर्तव्य उसको renounce कर दो, पर आप उनको बहुत selflessly करो, skillfully करो. The renunciate renounces the objects and goes far away from them, but he performs his essential duties. कि तो जो renunciate होता है ना, वो objects को तो चलो renounce कर देता है, पर but he also performs, पर जो उसकी essential duties है ना, उनको वो करता है, उनको निभाता है. पर कहते हैं, अब दुनिया वाले क्या हैं? Those who live in the world as householders also perform their essential duties. अब देखो, जो householder है वो भी तो अपनी duties कर रहे हैं ना, essential. कहते हैं, those who become selfish by receiving and using the fruits of their actions create many encumbrances for themselves. फिर मुश्किल की बात है ना, कि जो selfish हो जाते हैं अपने जो actions के fruits को लेकर, वो फिर वो ठीक नहीं है. कहते, it becomes difficult for them to get freedom from their self-created bondage. If all attachments and sense of ownership are not renounced, the path of renunciation becomes miserable. कहते, if the householders do not practice non-attachment and continue to strengthen selfishness and possessiveness, it also creates misery for them. तो उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन करके बताया है. जो रिनाउंस करते हैं वो भी, हाउस होल्डर्स का भी. तो मुझे तो यही समझ लग रहा है कि चाहे आप रिनाउंस करके चले जाओ, वहां भी आपको सिंसियरिटी से, जेन्युइन वे से निभाना है. और दूसरी चीज है, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो या दुनिया में रहते हुए भी आपको हर चीजों को सेल्फलेसली करना है, डिटैच होके करेंगे, तो वो भी अपने आप में बहुत ऊपर एक पाथ बन जाता है. To attain the purpose of life, it's necessary to do one's duties, whether one lives in the world or outside it. The path of renunciation, the path of action, though two diverse ways, are equally helpful for attaining self-emancipation. तो दोनों ही equally मदद करते हैं. One is the path of sacrifice and the other is path of conquest. एक sacrifice का है, एक जीतने का है. Okay, again the Baba spoke, the law of karma is applicable to all equally. Our past samskaras are deeply rooted in the unconscious. वो तो है ही है कि the law of karma तो हर एक के लिए बराबर है ना. जितने भी आपके पुराने जन्मों के संस्कार है, वो आप में आप लेके ही आते हो, deeply rooted है आपके अंदर. कहते, these latent sanskars or impressions create various bubbles of thoughts and express themselves through our speech and actions.
देखो क्या है, जिस तरह से भी इंसान पैदा होता है ना, पुराने कर्म लेके आता है, उसका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। वो पुराने संस्कारों की वजह से कई बार उसमें बहुत गुस्सा भी होता है, ग्रीड भी होता है, वो चीजें वो लेके आ रहा है ना। इन्हीं चीजों को तो खत्म करने आए गुरु जी। अपने पुराने संस्कार खत्म करो, नवे बन जाओ, गुरबानी से हम्बल बन जाओ, सेल्फलेसली सेवा करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो। तो अपने अहंकार को खत्म करो, क्योंकि शिव जी की तो खुराक ही अहंकार होती है, वो तो वैसे ही खा जाते हैं। ईगो को खत्म करो, डोंट फीड योर ईगो। और नहीं तो ये किसी ना किसी तरह उत्पन्न होती रहती हैं चीजें, हमारी स्पीच में भी, हमारे एक्शन से भी। वही चीज है ना, जितना मर्जी आप पाठ कर लें, अगर आपने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। वो आपकी स्पीच भी बदलनी चाहिए, आपके एक्शन में नजर आना चाहिए, आपका पाठ आपकी थिंकिंग में नजर आना चाहिए। It is possible for the aspirant to get freedom from these samskaras. These memories have a strong hold in the bed of our samskaras. Those who can burn these samskaras in the fire of non-attachment or knowledge are free from the bondage created by them. It's like a burnt rope, which loses its binding power, though it still looks like rope. When the latent impressions, though still in the unconscious, are buried by the fire of knowledge and lose the power of germination, they never grow. They are like roasted coffee beans. You can use them to brew a cup of coffee, but they have no power to grow. तो उन्होंने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया रोस्टेड कॉफी बीन से, कि ठीक है उसका असर आ जाएगा, you brew them, but they don't have the power to grow. कहते there are two varieties of diverse qualities of samskaras. क्या दो qualities हैं? One quality of samskara is helpful in the path of spirituality, and other is an obstacle. कहते non-attachment is like a fire that burns the binding power of past samskaras. जब हम इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं ना, नॉन अटैचमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पुराने जो संस्कार हम लेके आए हैं वो बर्न होते रहते हैं। और गुरु जी की कृपा से हमें इतना चीजों से मोह नहीं होने लगता, क्योंकि गुरु जी यही तो खत्म कर रहे हैं। ही नेवर स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम एंजॉयिंग द लाइफ, बट ही, वो भी कहते हैं ना, दुनिया च रह के दुनिया तो ऊपर रहना सीखो। ठीक है, ये चीजों को अपना माध्यम समझो, उनका मीन्स करो, एंड पोजेसिव नहीं होना चीजों को। दैट डजंट मीन इफ यू हैव बॉट समथिंग विद हार्ड एंड मनी एंड यू जस्ट वेस्टेड, you just got to take care of it, but you don't have to be attached to those particular things. Okay, the benefits which are derived by the renunciate, by renouncing the world, are derived by the householder by the practice of non-attachment. कहते जो एक रिनाउंसिएट करने वाला बंदा है ना, तो उसको बेनिफिट मिलता है। वो हाउस होल्डर भी ले मतलब घर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, आप दुनिया में रहते हुए भी ये कर सकते हो, पर आप नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस कर अगर करना शुरू कर दो। कहते रिनाउंसिएट अटेन्स अलाइनमेंट आउटसाइड द वर्ल्ड एंड द हाउस होल्डर इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छे पैरेलल का कंपैरिजन बताया है। नॉन अटैचमेंट डज नॉट मीन इंडिफरेंस और नॉन लविंग। नॉन अटैचमेंट एंड लव आर वन एंड द सेम। कहते नॉन अटैचमेंट का ये थोड़ी मतलब है कि आप इंडिफरेंट हो जाओ, और नॉन लविंग हो जो नॉन अटैचमेंट और प्यार एक ही चीज है। The non-attachment gives freedom, but attachments bring bondage. Through non-attachment, the householder remains aware of his purpose of life and does his duty selflessly. His actions become means for him. In renunciation, the renunciate remains aware of the purpose of his life constantly and attains enlightenment. ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, क्या कि जो हाउस होल्डर है वो भी उस अवस्था पर पहुंच सकता है अपनी ड्यूटीज को सेल्फलेसली करके और नॉन अटैचमेंट को अपना के, और जो उसकी एक्शंस है वो सिर्फ मीन्स हैं। और एनाउंसिएशन के लिए भी यही है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ है कि भी उसने अपने आप को एनलाइटन करना है। कहते नॉन अटैचमेंट एंड रेनाउंसिएशन एक्सपैंड द कॉन्शियसनेस। व्हेन एन इंडिविजुअल learns to expand his consciousness or unites with the universal consciousness, then he no longer remains within the bounds of its karma. One remains totally free. इसी को तो कहते हैं ना, जीते जी मोक्ष पा लेना। Such a great man has power to show the path of freedom to others, whether he's in the world or outside. He can also heal the sickness arising from karmic debts. He can remain untouched and above without being involved or reaping the fruits arising from others' karmic debts. A true master has control over himself and moves freely in the world. When a potter has completely making his pots, the wheel of the potter still rotates for some time. Just give me half a minute, it's just going to be finished, but is unable to manufacture pots.
कहते हैं, for a liberated soul, the wheel of life remains in motion, but his karma does not create any bondage for him. कि जो सोल लिबरेटेड हो जाता है ना, जीते जी मोक्ष पा लेते हो, ठीक है, आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर आप अब कोई कर्म का आपके बॉन्डेज नहीं रहता. कहते हैं, his actions are called actionless actions. When the student is competent to tread the path of enlightenment, it becomes easy for a great man to guide him, and one day he also attain ultimate freedom. I asked the Baba to tell me about the great men and their abilities of healing others. He said there are 3 levels of healing. तीन तरह की healing होती है: physical, mental, and spiritual. Man is a citizen of these 3 levels. One who has spiritual power can heal others on all levels. वो तो है ही, जिसके पास इतनी spiritual power है, वो हर तरह से heal कर सकते हैं. But if he tries to make healing his profession, his mind and will force will again start running toward worldly grooves. पर अगर आप इस healing power को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाएंगे तो फिर आप फिर दुनिया में धंसते जाएंगे. कहते हैं, a dissipated and worldly mind is not fit enough to heal anyone. फिर दुनियावी जो माइंड वो बन जाता है ना, फिर वो हील करने के काबिल नहीं रहता. The moment one becomes selfish, the mind changes its course and starts following downward to the lower grooves. अगर आप इस तरह से सेल्फिश होते जाएंगे तो फिर आप नीचे 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 ही होते जाएंगे. Misuse of spiritual power weakens and distracts the very basis of that power, which is called Ichha Shakti. The great men always say that all the powers belong to the Lord, they are only instruments. देखो, किसी ने पावर दी है ना, किसी जैसे ईश्वर ने किसी को पावर दी है, उसको यही सोचना चाहिए कि तो मेरे भगवान की पावर है, हम तो सिर्फ माध्यम है. Every human being has potential for healing. The healing energy is flowing without any interruption in every human heart. But the right use of the dynamic will, these channels of healing energy can be directed to the suffering part of the body and mind. The healing energy can nourish and strengthen the sufferer. The key to healing is selflessness, love, dynamic will, and undivided devotion to the Lord within. After 15 days, stay with the Baba, I came back with a conclusion that the art of living and being, whether in the world or outside, lies in awareness towards the purpose of life and non-attachment. बहुत अच्छा सीखने को मिला इसमें, बहुत डिटेलिंग में समझाया है. कहते बस मैंने तो यही सीखा है, चाहे आप दुनिया में रहो, दुनिया से हटके रहो, अवेयरनेस सबके अंदर है, और पर्पस ऑफ लाइफ जो है नॉन अटैचमेंट. हम अटैचमेंट्स खत्म ही तो करने आए हैं. अगर अटैचमेंट्स में इतने ज्यादा पड़ जाएंगे तो फिर उनको उनसे लिबरेट होने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा. और जहां हीलिंग की बात हुई, बहुत अच्छी बात है, कोई भी इंसान को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए. आप अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से अपने आप को हील कर सकते हैं. और हमारे गुरुजी ने तो हमें हीलिंग के लिए अपना चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरबानी और मंत्र जाप से इतनी हीलिंग होती है. ही हैज गिवन अस कंपैक्ट healing kit, actually, I would say, to put into a very, very simple manner. Guruji ने हमें healing kit दी हुई है. Now it's up to us how we heal ourselves, and we should also heal ourselves with a positive talk. स्पोकन वर्ड्स में बहुत पावर होती है. बीमारियों के बारे में ज्यादा बात ना करें, नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा बात ना करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट वेल, आई शुड से आई एम नॉट वेल, और नो, अगर मेरे को कोई बीमारी है, rather than that I should say no, I'm healing, I'm becoming better, because power, there is a lot of power in the spoken words. So on that note, thank you Guruji. बहुत 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 कुछ सीखने को मिला. इतने सेंट्स का आप बता रहे हो, अगर हम ये किताब ना पढ़ते, इस तरह संगत में बैठ के ना पढ़ते, तो शायद ना पता होता. आई हैव रेड दिस बुक 2 times बिफोर, बट सीरियसली दिस इज एक्चुअली आई एम कॉम्प्रिहेंडिंग एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. बिकॉज जब संगत के साथ हम बैठ के इकट्ठे बैठते हैं, सबकी रेज मैटर करती हैं, सबकी एनर्जी मैटर करती है. सो थैंक यू गुरुजी फॉर मेकिंग दिस संगत परिवार and this beautiful satsang. I would say it was a beautiful satsang today. Thank you Ekta ji, Shilpi ji, thank you Swami Rama ji and all the masters, BB ji and Anandmai Mata ji, और सब masters को हम नमन करते हैं. And above all, our Guru ji, the master of the masters. Thank you Guru ji. Thank you auntie, thank you very much, and every day you remind us something so important. So thank you very much for today's reading. Jai Guruji, Shukrana Guruji.